नमस्कार। आज 25 दिसंबर 2022 संडे के दिन डॉक्टर के HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में जो राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप एनवायरनमेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं 12 से 1 संडे को, उस प्रोग्राम में हमारे सभी एक्सपर्ट मेंबर्स का जो डॉक्टर के अग्रवाल जी ने जो एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्म किया, सारे एक्सपर्ट ग्रुप मेंबर्स का, और जो व्यूअर्स। डॉक्टर साहा एक बार म्यूट कर लें। डॉक्टर साहा सर एक बार म्यूट कर लें जी। तो हमारे सभी एक्सपर्ट मेंबर्स का और जो हमारे व्यूअर्स हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी के यूट्यूब फेसबुक पेज से जुड़े उन सभी व्यूअर्स का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले सभी एक्सपर्ट मेंबर्स को, व्यूअर्स को मैरी क्रिसमस। सभी के जीवन में प्रभु यीशु जो है सबको जो उनका एक वो था कि फॉरगिवनेस, और वो हमारे आज के दिन हमको ये सिखाता है कि उनके जो भी उन्होंने किया सोसाइटी के लिए और जो भी उनके आदर्श हैं उनके हम लोग उसके चिन्हों पे चलें, और एक जो उनका मेन है फॉरगिवनेस, उसको अमल करें। तो इसी के साथ मैरी क्रिसमस के साथ हम अपना आज का ये राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप एनवायरनमेंट की स्टार्टिंग करते हैं। आज का टॉपिक हमारा लास्ट संडे का जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू किया है। दिस वाज द टॉपिक इज द जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप रिपोर्ट 2022। दिस इज द टाइटल, स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन द साउथ एशिया। ये हम लोगों ने लास्ट संडे को डिस्कस किया था कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स के साथ, और फिर भी हम इसकी लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ था हमारे एक्सपर्ट मेंबर के साथ। फिर भी हम इसमें कुछ बैकग्राउंड के साथ हम अपनी एक्सपर्ट मेंबर्स के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट टाइम को मैंने बताया था कि जो साउथ एशियंस आर एक्सपोज टू एक्सट्रीमली अनहेल्दी लेवल्स ऑफ एम्बिएंट एयर पोल्यूशन, स्पेशली इन डेंसली पॉपुलेटेड एंड पुअर लोकेशंस। लाइक इवन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हम लोग ये देखते आ रहे थे कि पर्टिकुलरली जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द दिल्ली है, ट्रांस यमुना, बिकॉज वेरी वेरी डेंसली पॉपुलेटेड है, और जो थोड़ा पुअर लोकेशंस वहाँ लोकेटेड हैं, तो वो उस एरिया में बहुत ज़्यादा जो है एयर पोल्यूशन लेवल्स रहते थे, पर्टिकुलरली एरिया लाइक आनंद विहार एंड ऑल। सो दिस इज द वेरी फैक्ट दैट रिपोर्ट में भी ये हाईलाइट किया कि जो पर्टिकुलरली स्पेशली जो डेंसली एंड जो पॉपुलेटेड एरिया हैं, दे आर मोर exposure to the air pollution, particularly the PM 2.5. In South Asia, nearly the report says 60% of population level in the area where PM 2.5 जो concentrations exceeds an annual जो mean of the 35 microgram per meter cube. That is which is 7 times higher than the WHO guidelines जो अभी last year recommend की थी, पहले 10 थी, now it is 5 microgram per meter cube. Whereas in the densely populated Indo-Gangetic plain जो हम बात कर रहे थे, चाहे वो start with the different जो आपका पंजाब से हरियाणा और दिल्ली, some part of राजस्थान, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, ये some, और बिहार में there are some part जो it is 20 times the levels of the WHO guidelines, बिकॉज जो एवरेज जो है यहाँ पे 100 माइक्रोग्राम जो है पर मीटर क्यूब ऑब्जर्व किया गया, एंड सम डेज पर्टिकुलरली नवंबर दिसंबर इट इज ऑब्जर्व्ड मोर देन 80 टाइम्स इन दी ऑफ द WHO गाइडलाइंस। हमने देखा कि बहुत से सिटीज में पर्टिकुलरली जो दिल्ली NCR में जो सिटीज हैं, या जो बिहार के सब सिटीज हैं, इंक्लूडिंग जो है बेगूसराय और दरभंगा, कटिहार, और ये चाहे इसका है पूर्णिया है, सिवान है, ये सब रीजन में भी मोर देन 400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है आपका माइक्रो PM 2.5 लेवल्स ऑब्जर्व किए गए। तो इट इज मोर देन 80 टाइम्स दी WHO गाइडलाइंस। तो इस रीजन में बहुत ज़्यादा रहा। दिस एम्बिएंट एयर पोल्यूशन इन पब्लिक हेल्थ क्राइसिस फॉर साउथ एशिया नॉट ओनली imposing high economic costs
but also causing an estimated 2 million premature death every year. That was the report मैंने last time बताया था. That way. Sources of such pollutions we all know, including solid fuel combustion in the residential sector for cooking and heating, because we had more poor location, poor people dependent on these kind of including coal, wood, and other things that was, and industries including the brick kilns also, the current management practice of the जो हमारे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के हैं और जो है इन दिस रीजन, इंक्लूडिंग जो बर्निंग अप, जो हमारे बहुत से पुअर लोग हैं प्लास्टिक वगैरह बर्न करते हैं, देन ऑल्सो दे बर्न लॉट ऑफ जो है जो वायर वगैरह उसका केबल्स वगैरह मेटल निकालते हैं. तो दीज आर प्रैक्टिसेस जो अनऑथराइज सम काइंड ऑफ एरियाज हैं और इलीगल वे में ये होता है. दिस इज ऑल्सो सोर्सेस ऑफ दिस रिपोर्ट आइडेंटिफाई 6 रीजन जो एयर शेड रीजन्स हैं इन साउथ एशिया where special dependence जो है is in the air quality is very very high. These regions last time का discussion भी था कि this is first is the west and central Indo-Gangetic plain. उसमें पंजाब का जो पाकिस्तान का पार्ट है, पंजाब का इंडिया का पार्ट, जो इंडिया का पार्ट है जो पंजाब है, हरियाणा, पार्ट ऑफ राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश. These are the first जो है एयर शेड है वेस्ट एंड the central जो है Indo-Gangetic plain. Then central and eastern Indo-Gangetic plain में बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बांग्लादेश, these are the part of that. Then middle India में उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ है. Then middle India का second part है ईस्टर्न गुजरात एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र. Then आपका नॉर्दर्न जो सेंट्रल एंड इंडस रिवर प्लेन है उसमें पाकिस्तान एंड सम पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान. Then southern Indus plain and the further west जो है उसमें साउथ पाकिस्तान, वेस्टर्न अफगानिस्तान एक्सटेंडिंग टू इनटू ईस्टर्न ईरान. तो दीज आर दी वेरियस 6 एयर शेड. हम लोगों ने आई थिंक दिल्ली में ये कॉन्सेप्ट को बहुत पहले 2010 ऑनवर्ड्स जब मॉनिटरिंग दिल्ली में स्टेशंस लगे थे, गुप्ता जी हैं जब हम लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम्स पे ये मॉनिटरिंग स्टेशन 6 लगाए गए थे, उसके बाद से ही हमारा ये था कि ये कॉमन एयर शेड जब तक नहीं होगा, दिल्ली अगर मॉनिटर करती है, अदर स्टेट से अदर सिटी मॉनिटर नहीं करते हैं और ये कॉमन एयर शेड है, तब तक हम कोई स्टेप्स लेंगे तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा. तो एयर शेड की बात हम लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत पहले से उठाई हुई थी और वही इस रिपोर्ट में भी है. तो इसके अलावा जो फोकस इस रिपोर्ट में है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं शुड रिड्यूस जो है मीन जो एक्सपोजर लेवल्स फ्रॉम 35 to 26 दिस कैन बी रिड्यूस अगर हम हॉट स्पॉट फोकस करते हैं. और दिल्ली में तो हमारा 13-14 जो हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाइड हैं उन पे फोकस भी ऑलरेडी हुआ है और स्टेप्स जो इसको जो है रिड्यूस जो इमिशंस फ्रॉम दी जो हाउस होल्ड एंड जो इसके लेवल्स पे हैं एम्बिएंट बोथ है सिग्निफिकेंट रिड्यूस जो है प्रीमेच्योर डेथ का रिड्यूस हो सकती है अगर हम इस पे स्टेप लिए. दिल्ली गवर्नमेंट और अदर स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत स्टेप्स लिए हैं और स्टिल कंटिन्यू. एंड कैप में आने के बाद बहुत से जो सिटीज के अंदर में हैं वहाँ भी बहुत से एक्शन प्लान हो गए. बट आई थिंक वी हैव टू गो लॉन्ग जर्नी और ये अभी जो एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं है. इसी रिपोर्ट पर हम डिस्कस करेंगे. तो मैं फर्स्ट डॉक्टर साहा से रिक्वेस्ट करेंगे, देन एसके गुप्ता जी से कि हम आज इस रिपोर्ट पे दो हैव वी डिस्कस लास्ट संडे आल्सो, बट विल स्टार्ट विद डॉक्टर डी साहा से जो सीपीसीबी में एडिशनल डायरेक्टर हैं एयर पोल्यूशन का. इनको बहुत अच्छा जो है एक्सपोजर फॉर मोर देन 40 इयर्स काफ़ी इन्होंने काम किया एंड स्टिल कंटिन्यूइंग विद दी अदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहा से कि आज पे जो रिपोर्ट पे अपने व्यू एक्सप्रेस करें. ओवर टू डी साहा सर. थैंक यू अनिल जी. आपने तो सब कुछ समरी कर ही दिया, मेरे लिए बचा कुछ नहीं है. अरे सर नहीं आप तो एक्सपर्ट हैं, हम तो बस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बाकी आप लोग एक्सपर्ट हैं. मैं तो कोऑर्डिनेटर जो होते हैं ना, वे लर्नेड कोऑर्डिनेटर एंड कोऑर्डिनेटर में अंतर भी होता है. बिकॉज यू आर लिविंग इन दिस प्लेस, यू आर डीलिंग विद दिस इश्यूज एंड यू आर मॉनिटरिंग, यू आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम. So you know better than me always. But Merry Christmas and greetings to all. तो एयर पोल्यूशन आपने जिस तरह से आपने डिफाइन किया कि इट्स रीजनल इशू, तो रीजन को that report also describes that it is a regional issue. And evidence also, evidence from satellite, remote sensing,
demonstrates that the more than 99% of India's population lives in the areas that exceed WHO 2.5 norms or guidelines, whatever you call it. Whatever you call it. So, जो regional problem, that means probably the first report wherein they have identified the region, the people are getting exposed to pollution, and hundreds of millions of people exceed the guidelines of 10 times. आपने गुप्ता जी ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया. And the other aspect, what our coordinator Anilji has described, wherever the monitoring stations are there, we are able to visualize. And we don't have any other, we are not able to visualize because we don't have the monitoring stations, the measuring stations, the sampling stations. Now the major cities and rural areas are alike are extremely polluted. And indicating the importance of both primary emission sources and regional atmospheric chemistry. Though one is regional, another is the atmospheric chemistry is responsible for it. Now, if it's really, if we are concentrating our region, the Pakistan, Bangladesh, Nepal, these are the more impacted areas. And if we consider North India and South India and an Indian average, in North India, 98% of the people are having the exposure. And all India, it is 83% people are exposed to it. And South India, it is 56%. This is the report also says the exposure level. And this is really an issue. Am I audible to all? Yes. Yes, sir. Now the thing. Now, Gupta, Anilji just now has told about the situation in our region. Now, because probably the foresighted tests of Bihar State Pollution Control Board nowadays, I am working for this Bihar State Pollution Control Board, and Bihar may be the only one state in the country where they are trying to establish measurement system or the monitoring locations in every district. It is having 35 districts, and as on date, it is able to cover about 25 districts. And total there are 35 monitoring stations in the area. And from April to December, we have monitoring data. Siwan tops the list. It is having an average of 75.3 micrograms per meter cube, followed by the Begusarai. It is 70.7, the Buxar 70.1, Purnia 69.2, and followed by, and the lowest was observed to be at Ara 30.1, and the problem area Patna is having 62.8. Problem area Muzaffarpur is around 54.6, and Gaya is 52.9. Now, because we are having three, I'm talking about because I'm trying to set an example with a case study. Nowadays, I'm being associated. Now, the thing is that we have declared Patna, Muzaffarpur, Gaya as a problem area.
But if you really consider the problem area, entire state is problematic. Now we are having monitoring stations in 25 districts. All the districts, it is not able to meet the norms because all three districts are commercialized. Patna, Gaya, Muzaffarpur. That's why Bihar State Pollution Control Board had the sensors, and we are having the data of it, and we are able to know it. So the more the monitoring station, more the problem areas, this equation would be clear to all. So the thing is that anthropogenic aerosol, because concentrated emissions are there, and industrialization was the cause. But one thing, the scientists are really not trying to correlate with the geographic locations, the soil type, and from where it is coming. It is anthropogenic plus geogenic plus geological. Because if you really, the winter is a seasonal affair. We cannot avoid winter. And in winter, the flow of air from the northwest or north, it is the low pressure zone being created in the Bay of Bengal. Now, we can't stop it. We can't even think of reducing or increasing the wind speed. We are not in our temperature, we cannot control. Daylight, we cannot control. Only thing we can control the anthropogenic sources. Now, the issue is the emission from any designated area or a geographical area or any urban area. The emissions remains almost constant throughout the year. It varies maximum 1%, 2% throughout the year because the setting is same, activities are same. So it is not wise to blame the cities, not scientifically correct to blame the city administration, and it cannot be controlled in a mathematical way. The CPCB has described the NCAP asks for 20 to 30% reduction of the PM10 on PM2.5. This is a mathematical formula, and this mathematical formula is not applicable, cannot be applied. The monitoring data depends on where the station is located. Monitoring data depends how the surroundings or neighborhood area is behaving. Monitoring data has to require to describe how much area is covering. Monitoring data, which type of monitoring and how it is being maintained or calibrated. All these issues are not taken into account where we are doing the monitoring. As for example, just without Banaras, I'm not criticizing, please, just for scientific reasons. Banaras is having 2 CAQMS. Patna is having 6 CAQMS. Now, 2 versus 6, is it a correct way of demarcation? Is it a way of 6 station location of the station? The concept of Bihar, they have established all monitoring station on all critical areas. And while in Banaras, they have away from the city. So this data cannot represent the same type of air quality. Cannot represent. So these things are also required to be taken care. Plus, Banaras is having the hard soil. More or less, the density of Bihar soil and UP is much difference is there.
If one end goes to the Bihar, you will find is a powder, talcum powder like soil is there. But where is Banaras is not. Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Very well, So sir. the, Yeah. So the thing is that such comparison should be done in a scientific way, because Anilji has started with the Bihar example. That's why I tried to tell what is the problem in this. No mathematical formula can be established until and unless the rationalities, logical aspects are taken into consideration. Now, the dust aerosol is a natural process. Usually consists of local suspended dust. It is a solid, it can be solid, it can be road construction and activities, transported by the winds also. And all these are considered as the aerosol. Now, not all the aerosol particles cannot be the bad one. This is not for problematic. It neutralizes many anthropogenic aerosols and gases. That is required to be taken into consideration. Considering PM mass, entire PM mass is problematic, we have to come out of this situation. This is the chemistry. We have to go with the chemistry. We have to go with the toxicity. We have to go with the exposure. And that, therefore, the management plan is required to be placed in such a way. So again, the example, the ammonia. Most of the Indian cities are suffering from ammonia. It is a problematic also, and neutralizing effect also. The ammonia and chloride both are produced as natural products, not the anthropogenic products, but they have tremendous affinity to form ammonium chloride. Now, the ammonium chloride is a micronutrient for the soil. Similarly, sulfate is an anthropogenic, and chloride is naturally origin. So, nitrate and sulfate, all these are natural plus anthropogenic. So, neutralization capacity. What I am willing to tell, whatever we are considering in our study, we are considering and depicting and telling in a physical way. But nature has his own laboratory also. If we take bad food, there will be problem in our stomach. So nature, because up to balance it, there will be loose motion, there will be vomiting, there will be some problem. So the thing is, nature is always tries to neutralize in its own laboratory. That part no science is considering. But nature has a tendency to neutralize, to balance, and make it an optimal way for this our survival. That part no modeling is taking care. That part no scientist is taking care. They are only going. This is my personal. I am not going. I am not hurting any person, and I am not criticizing any person. My feeling just that because this is an open forum. Until and unless we depict this information to our science, the studies, etc., have no meaning for me. And there are micronutrients also, good particle, sodium, potassium, calcium, iron. These are all natural products. And if we are considering all these, everything is a problem for us, this may not be the correct one. And
I'm not telling. If we see the problem, the definition of air pollution, it is telling it should be free from any dirt particles, any gaseous pollutants, everything, because that is considered as a breathing air. The contradiction is this definition, if we are complying, everything is a pollutant. But if you see the definition given even our Air Act, so everything, whatever the other than air, breathing air, natural air, everything added into the air is a problematic. But there are resistances also within the human being. There are also salt formation in the laboratory of the nature. There are also micronutrients are very essential for our soil. And seasonal changes are also very important, and it's not the new thing that is gives us the diversity. Seasonal changes, summer will be there, winter will be there, rainy season will be there. Everything is there. It is defined by the Earth rotation. So the thing is that all these things are the requirement for sustainability of the Earth. So my question, rather my personal conclusion is that we need to study the chemistry, not only the physical chemistry, but the metabolism, how these are behavior of these particulates inside the body. If something is soluble, that means it is not going to our blood. But something is not soluble, those may enter into our blood. And something is soluble, even if it enters in our blood, we have the excretory system. We are a living system, it will try to excrete out from our body. All these things are required to be taken up. Actually, people, somebody is working on satellite, and if he interprets the data on the mortality or morbidity using the data, and there is no work in the field about the mortality, morbidity, physical and medical examination, this is not science. Actually, we have landed up with a two group of people. One is exaggerating the data. Other is scientists are not willing to go with the chemistry. And third group is trying to interpret, yes, I am the master. And this data can be correlated to this. So these are the real issues we need to sort out. And we need to understand. I'm not criticizing again. I'm sorry, some are not. But the measurement also, we don't want to follow the discipline of the methodology. Methodology even is also not correct, because whatever data is given to the in our website or to it is nowadays it is a world data. World data, how they are doing, how they are generating, what is the quality, which source the data has come, who has monitored, all these people are not responsibly given. Responsibility is required to be given. This is because I'm not claiming that I'm trying to do all these things, but these are the issues of concerns we need to address through scientific, appropriate scientific forum. Even I'm telling you, I'm not going to tell the name. Somebody has proposed in a proposal that 5 days monitoring would be adequate for conducting source apportionment studies. 5 days monitoring, just imagine. You may not be, the proposal may not be in a position to take care of any of this, either in episodal days or in any particular season. 5 days is nothing. So we need to really rethink the way we are working.
we need to really think in this direction, how the human population, the citizens can be protected with the correct science. This is my submission. Thank you very much. I'm sorry once again to all, but Merry Christmas to all also. Thank you. Thank you very much, Dr. Saha. You very well explained the complexity of the atmosphere and the chemistry is required, and how the secondary particles behave in the formation of PM 2.5. Though always in many forums say this is only not the PM 2.5 is not only the source. We have to think other gases and things like, or other pollutants. So thank you. You were very well explained, and I think these issue need to be addressed well by the expert scientists who are working in the field, because this is very the atmospheric chemistry very complex. Though study conducted by various the role of the secondary pollutant, secondary particles, and how particularly the gases convert to the particles and contribute in the PM 2.5 particularly. So these need to be in the atmosphere. What is the various kind of modeling, or by other methods it can be nature chemistry can be understood, and whatever the role of the secondary particles very well need to be explained that way. So thank you, Dr. Saha. Now I request HK Gupta ji, who is in the field for I think more than about 35-40 years, and working on particularly so much the focus on the monitoring part he has established in India, and I think every big good city, I mean, there's monitoring by either continuous ambient air quality monitoring stations, or even the manually. So he's I did a lot of work in the monitoring. So I'll request HK Gupta ji, so give about today's the topic that way. थैंक यू डॉक्टर साहब. आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एयर पोल्यूशन का पब्लिक हेल्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है. और ये जो WHO की रिपोर्ट आई है, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत टाइमली रिपोर्ट आई है, और ये इट विल एक्ट एज ए ट्रिगर फॉर मैनी सोसाइटीज, क्योंकि इसमें उन्होंने एक तरह से गाइडलाइन हमारे को ले डाउन की है कि अगर भाई अपने हेल्थ को बचाना है तो इस लेवल तक पोल्यूटेंट को रखो, अदरवाइज हेल्थ आपकी खतरे में रहेगी. इसमें कोई बुराई बात नहीं है. किसी ने अगर रिसर्च करके आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है, फाइंडिंग दी है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अपने सोसाइटी में आपके रिसोर्सेज हैं या नहीं है उस लेवल तक नापने के, या उस लेवल तक नीचे लाने के पोल्यूशन को, वो एक दूसरी बात है. बट मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट ये गाइडलाइन के रूप में आई है सबके सामने, और हमें इसको बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए. लेकिन दो बातें मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रही. पिछले 40 साल से, जैसा अनिल जी ने बताया कि मैं मॉनिटरिंग के काम में लगा हुआ हूँ. 1981-82 से मैंने शुरू किया था, और तब से और आज तक अभी तक मेरी ये समझ में नहीं आया कि दो चीजें ऐसी हैं जो अभी तक हम लोग बातें ही कर रहे हैं चार डिकेड से, लेकिन उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे. एक तो ये कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड मेट्रोलॉजी, especially local meteorology including mixing heights and other things, इसको अभी तक हम समझ नहीं पा रहे. और जब भी समझने की बात करते हैं तो हमारे रिसर्चर या साइंटिस्ट कहते हैं कि वी नीड लॉन्ग टर्म डेटा, लॉन्ग टर्म स्टडीज. तो हम लॉन्ग टर्म स्टडीज क्यों नहीं प्लान कर रहे हैं, क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? हमें किसने रोका हुआ है लॉन्ग टर्म स्टडीज को प्लान करने के लिए, ताकि ये रिलेशनशिप समझ में आए लोगों की, और उसके हिसाब से पॉलिसी डिसीजंस लिए जा सकें. जब भी पॉलिसी डिसीजन लेने की बात आती है, हम पीछे हट जाते हैं कि साहब हमारे पास अभी इनफ एविडेंस नहीं है, हमारे पास रिलेशनशिप समझ में नहीं आई है, हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं है. तो एक तो ये बात समझ में नहीं आती. दूसरी बात ये समझ में नहीं आती कि जो एयर पोल्यूशन का हेल्थ के इम्प्लीकेशंस हैं वो भी लॉन्ग टर्म स्टडीज से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमेशा ये माना गया है कि जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं सब ने कहा है कि एयर पोल्यूशन के जो इम्पैक्ट्स हैं वो हेल्थ के ऊपर लॉन्ग टर्म के बाद ही दिखाई देते हैं. इट टेक्स आफ्टर ईयर, 2 years, 3 years, तब आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है कि कौन से पोल्यूटेंट ने कहाँ आपकी बॉडी को खराब किया, और उसका असर जो दिखाई देता है वो 2-3 साल के बाद दिखाई देता है. तो
अब हमारे पास जब मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं थे तो हेल्थ वाले लोग बोलते थे कि भाई हमारे पास डेटा कहाँ है, जब तक डेटा नहीं होगा तो हम कैसे हेल्थ इम्प्लीकेशन बताएं। अब इतना सारा डेटा अवेलेबल है ऑल ओवर द कंट्री, तो हेल्थ स्टडी वाले खामोश हो गए। वो कहते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं है। तो ये कब कैसे इकट्ठी होंगी लॉन्ग टर्म स्टडीज और कैसे डेटा इकट्ठा होगा हेल्थ के ऊपर। तो अब इतने, मैं तो कई दफा अनिल कुमार जी भी जानते हैं, जब कभी कभी इनसे मिलने आया करता था तो मैं यही कहता था कि सर हमारे दिल्ली में अब ये पहले 4 स्टेशन थे, अब 24 स्टेशन हो गए, तो कम से कम इन स्टेशन के अराउंड ही हम किसी हेल्थ प्रोफेशनल्स को, किसी हेल्थ इंस्टीट्यूट को क्यों नहीं ये काम देते कि भाई देखो यहाँ से मॉनिटरिंग डेटा आ रहा है, अब इसके अराउंड जो पॉपुलेशन है उसको आप कैप्टिव पॉपुलेशन मान के, कंट्रोल पॉपुलेशन मान के क्यों नहीं आप इसके हेल्थ इम्प्लीकेशन असेस करते। अब से ये तो पता रहेगा कि भाई SO2 से क्या खराबी हो रही है पॉपुलेशन के ऊपर, या NOx से क्या खराबी हो रही है, या ओजोन से क्या खराबी हो रही है, या PM 2.5 से क्या खराबी हो रही है। अब कम से कम 8-9 पैरामीटर आपके आ तो रहे हैं, 12 में से चलिए 6-7-8 आ रहे हैं। अमोनिया भी आ रहा है आपके पास, बेंजीन भी आ रही है। तो कोई आज तक कोई रिपोर्ट आज तक अभी तक नहीं मिली हमको। 10 साल थे तो कॉमनवेल्थ गेम्स के 2010 में लगे थे, 12 साल तो अभी दिल्ली में हो गए, एक भी रिपोर्ट नहीं आई है किसी हेल्थ प्रोफेशनल की तरफ से कि बेंजीन की वजह से इस पॉपुलेशन पे ये असर पड़ा, या PM 2.5 की वजह से ये असर पड़ा, या SO2 की वजह से ये असर पड़ा। तो ये क्यों नहीं हो रहा। हम क्रिटिसाइज तो करते रहते हैं रिपोर्टों को कि अगर WHO ने निकाल दी तो हम इसके पीछे लगे हुए हैं कि WHO के स्टैंडर्ड जो हैं वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है मेंटेन करने, अचीव करने। वो तो बात ठीक है, चलो अचीव नहीं करने पॉसिबल आपके तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक कम से कम एक भली ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बता तो दिया कि भाई ये इम्पैक्ट नुकसानदायक है। तो हम क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं अपनी सोसाइटीज के अंदर, अपनी कल्चर्स के अंदर कि हम ये स्टडीज को शुरू करें। जब तक हम करेंगे नहीं शुरू, तब तक हम क्या बात करें। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी नीड है इस वक्त देश के सामने, या जो एयर क्वालिटी के प्रोफेशनल्स हैं या मेडिकल फील्ड के प्रोफेशनल हैं, इनको एक सिनर्जी बताने की बहुत जरूरत है। मेडिकल के लोग ये बताएं कि उनको किस तरह का डेटा चाहिए, किस किस टाइम का चाहिए, कितनी फ्रिक्वेंसी का चाहिए, कितनी ड्यूरेशन का चाहिए। अगर हेल्थ इम्प्लीकेशन वही कहते हैं कि भाई 24 घंटे का कम से कम डेटा हो तो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, फिर 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, तो एवरेज वैल्यूज हमें चाहिए। तो अब हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने मॉनिटरिंग मेथड्स को या मॉनिटरिंग प्रक्रिया को आसान करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए AQI हमारे पास अब ये एक पैरामीटर हो गया है कि भाई AQI बता दो तो उससे हेल्थ पोल्यूशन लेवल पता लग जाएंगे। तो क्या AQI से टॉक्सिसिटी पता लग जाती है? क्या AQI को बता के हम ये बता सकते हैं कि इसके हेल्थ के इम्प्लीकेशन ये होंगे? तो हम पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो अब बड़े कन्फ्यूजन सी हो गई है। तो मुझे लगता है कि हमको बहुत क्लियरली, जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस वक्त जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स का है कंट्री के अंदर, वो ये आगे बढ़ के बताएं कि उनको किस तरह का मॉनिटरिंग डेटा चाहिए, ये बताने के लिए कि इस पोल्यूटेंट से ये इम्पैक्ट हो रहा है हेल्थ के ऊपर। तो वो तो जब तक ये लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो सख्त जरूरत है इस वक्त देश के सामने, जो WHO की रिपोर्ट है वो एक तरह का ट्रिगर है हमारे लिए कि हम वो इस तरह की हेल्थ स्टडी को शुरू करें और ये बताने के लायक हो जाएं साल में, 2 साल के बाद या 4 साल के बाद कि हाँ SO2 के ये लेवल्स हमारे लिए खतरनाक हैं, PM 2.5 के ये लेवल्स हमारे लिए खतरनाक हैं। हम अपना तो डेटा इकट्ठा कर नहीं रहे, दूसरा को इकट्ठा कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उससे कहाँ पहुंचेंगे, क्या नतीजा निकलेगा हमारे को। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत जबरदस्त इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, और ये रिपोर्ट हमारे को इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए एक मौका दे रही है कि करो भाई, शुरुआत तो करो, नहीं तो कैसे होगा। हम ये कहते रह जाएंगे कि भाई हमसे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, ठीक है नहीं है पॉसिबल, लेकिन कुछ तो शुरू करो। तो मुझे ये लगता है कि हमें इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है, और ये रिपोर्ट मुझे लगता है कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जिसको हमें उसी रूप में लेना चाहिए कि भाई हमें शुरुआत करनी है। बस इतना ही मैं। जी 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 गुप्ता जी, थैंक यू। ये गुप्ता जी गुप्ता नमस्कार। आपको नमस्ते भी बहुत बहुत ये जो इशू है जी। health impact, because whatever the rules, regulation, monitoring, everything, modeling, everything is being done, जी looking it should address to the जी public health. That's why my intention is always how much it is really problematic to maintain the public health, that is nobody is addressing.
जी This is then one of the issue. I'm not telling, we are not never criticized the WHO report, जी because the WHO report is not applicable for us in our terrain, our condition, our geography. That we will definitely say all the time. If somebody is considering the PM mass as the indicator of pollutant or describing whether it is polluted or not polluted or good or bad, this is not acceptable to the scientist, because comparison वहीं पे possible है when we are comparing an apple with an apple. This is not wise that they will consider. They should consider these different geography, different population size, different activity, etc. Among these, they should confine. And it is not me. It is also European scientists are talking about the problems in this region. So in this region, we are now very much versed with the ventilation coefficient, the mixing height. Why it is happening, that is also known. Only the leftover part is the toxicity part and health impact part. These are required to be correlated. You have to admit your immunity power and my immunity power is not correct. So the implications cannot be same in both the cases. That medical science, it is a word of the medical science. My grandfather was a doctor. He used to tell, no two different patients are same. You have to differently treat them and ask different questions. So if we are considering even two patients are not equal, that was the statement given by my grandfather, who was a doctor in those days during the Bidhan Chandra Roy's days. If he could conclude that thing, why we are not able to conclude? We are giving a general remark and instruction for the scientists in the globe. This is my condition. So all individual study is required to be carried out. 2%, 3% sample size are to be taken into consideration. There you can go for things. Yes, this may be the, if these are the rational, then these are the implications, likely implications. That way people should try to correlate. Thank you very much. थैंक यू शाह साहब एंड थैंक यू गुप्ता जी. गुप्ता जी ने बहुत वैलिड जो है बहुत पॉइंट्स रेज किए डेफिनेटली. और जो हमारा हम डॉक्टर के अग्रवाल जी थे तब हम यही बात किया करते थे कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स का और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा विद द पोल्यूशन कंट्रोल. तीनों आज जब तक जो पोल्यूशन कंट्रोल एक्सपर्ट और रिसर्च इंस्टीट्यूशन मेडिकल एक्सपर्ट तीनों का नहीं होगा तब तक हम ये इशू पे हम बात करते रहे. आज भी देखिए जो कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, मे बी एक्सेप्ट फ्यू आप छोड़ दें जो अगर कोई एम्स वगैरह में काम कर रहे हैं, बट अदरवाइज जो बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन नहीं है रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ. आज भी अभी दिल्ली की चाहे अगर रियल टाइम सोर्स ऑफ स्टडी है, that is only with the academic or research institution with the pollution control, not with the medical experts. That is very very important. जब तक वो नहीं होगा, I think MOEF ने एक स्टडी स्टार्ट भी की थी. I don't know how the outcome, so many years काफी हो गए हैं, बट जो पर्टिकुलर हेल्थ इम्पैक्ट स्टडी अभी तक कोई मतलब फील्ड में लेवल पे इस तरह की नहीं आई है कि इंडिया में कि वो रियल पता चल सके कि आपका जो डिफरेंट जो इम्पैक्ट है आप पोल्यूटेंट्स का, उसकी टॉक्सिसिटी का, उसकी जो केमिस्ट्री का और क्या रिक्वायर्ड है. ये जो अभी रियली वो तो ठीक है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में ये हाईलाइट किया है बेस्ड ऑन दी जो हमारा अवेलेबल डाटा, मे बी ऑन दी सेंसर बेस्ड डेटा हो ऐसे जो और अदर काइंड ऑफ डेटा, बट डेफिनेटली ये चीजें हमें एड्रेस करने की जरूरत है कि इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड. तो आज ये हम लोगों ने पॉइंट स्टडी किए, सब लोगों ने क्वेश्चंस जो भी अरेंज किए. नाउ आई थिंक वी हैव जस्ट 5-10 मिनट्स. और गुप्ता जी ने, डॉक्टर साहा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आज के पूरे टॉपिक को जो हमारी इंडियन कंडीशन में रिक्वायर्ड है. तो मैं ज़्यादा टाइम लेते हुए प्रदीप जी आर हियर, मैं आपसे 2 मिनट चाहूँगा. आई थिंक ही इज मे बी खंडेलवाल जी.
क्योंकि पर्टिकुलरली जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो हम लोगों ने जो आफ्टर लास्ट अबाउट 10 years में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप्स भी लिए, स्टिल जो आपका इस एरिया में जो प्रॉपर इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का जो बहुत कंट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन पे। तो चलिए, आई थिंक खंडेलवाल जी अभी मे बी बिजी समवेयर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई एनीबडी फॉर जो है नीरज जी, डॉक्टर रविंदर, कुछ बिकॉज लास्ट टाइम आपने बताया था, एनी पॉइंट अगर फर्दर यू वांट टू ऐड दैट, so we have just 5 minutes, so we can just take up that point. Anybody if interested to say about this topic today? नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं शाह जी की बात पे थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा था। शाह जी बिल्कुल। मैंने किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए ये बात नहीं कही थी कि भाई हमने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा गैप है हमारे यहाँ और हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अब हमने जब एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नोटिफाई किए थे 81 82 में, तो हमने कहीं से अडॉप्ट तो किए थे ना, वो वी हैड टेकन दोज स्टैंडर्ड फ्रॉम समवेयर, वी हैड टेकन फ्रॉम यूएसईपीए। चाहे वो हमारे देश के लिए रिलेवेंट थे या नहीं थे उस टाइम पे, दैट वाज अ डिफरेंट मैटर, बट हमें कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी होगी ना। तो हमने वो शुरुआत की वहां से और अब से उसके बाद आगे बढ़े। लेकिन अभी भी हमारी जो डिपेंडेंस रहती है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करने की, वो अभी भी हम किस चीज पे बेस करके वो स्टैंडर्ड नोटिफाई कर रहे हैं? क्या हमने अपनी स्टडीज के बेसिस पे वो स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई किया है, पोल्यूटेंट को आइडेंटिफाई किया और नोटिफाई किया है? नहीं, अभी भी हम बाहर के स्टडीज पे डिपेंड करके उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर शाह जी ने पॉइंट आउट 2-3 चीजें अच्छी कही, भाई मिक्सिंग हाइट है, वेंटिलेशन कोफिशिएंट है, ये मेट्रोलॉजी और पोल्यूशन के रिलेशनशिप को नोटिफाई करता है, मिक्स आइडेंटिफाई करता है। ऐसी हेल्थ के ऊपर अगर हैवी मेटल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हैवी मेटल नोटिफाई हुए, अगर उसको हम नहीं नाप रहे तो हम क्यों नहीं नाप रहे? हम मजबूरी करते अपनी जाहिर करते रहे कि ये डिफिकल्टी है, वो डिफिकल्टी है, तो फिर हमें स्टैंडर्ड नोटिफाई करने का फायदा ही क्या? दूसरा, अगर हमें PM1 अगर नजर आता है कि PM1 हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है हमारी हेल्थ के लिए, तो हमें नोटिफाई करने में हेजिटेशन क्यों है? उसको हम क्यों ये कह रहे हैं कि नहीं अभी तो हमसे PM2.5 नहीं नाप रहा, हम PM1 कैसे नापेंगे और कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो हमें इन चीजों से डरना नहीं है। देखिए, हमारी हेल्थ के ऊपर असर हो रहा है और इसको हम इसके ऊपर पर्दा डालते रहेंगे तो क्या वो असर कम हो जाएगा? होना असर तो उतना ही होता रहेगा। हमने उसके आगे आंखें बंद कर ली हमने, वो बात दूसरी है, लेकिन असर तो हो रहा है। तो असर जो हो रहा है, कम से कम ये देश के सामने तो रहना चाहिए कि भाई इन चीजों से असर हो रहा है और ये हेल्थ के प्रोफेशनल्स को वेरीफाई करेंगे कि हाँ इसका असर हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारी पब्लिक हेल्थ सफर कर रही है। तो हमें इसको अपनी आंख में पर्दा डाल के बंद नहीं करना है अपनी आंख को, हमको आंख खोल के बल्कि और हाईलाइट करना है इसको कि हाँ ये हो रहा है और इसको हमें इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। ये मेरा कहना है कि हमें इसको बचना नहीं चाहिए, इसको फेस करना चाहिए। जी, थैंक यू गुप्ता जी। एंड एनीबडी, मैं खंडेलवाल जी, अगर आप कुछ कहना चाहें जस्ट टू, बिकॉज मैं ये चाह रहा हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है सिटीज में, और जो चाहे वो सेग्रीगेशन हो या वेस्ट मैनेजमेंट का, बट स्टिल जो है अभी एक ही पॉइंट आता हर जगह की जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ द एयर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जो जबकि लास्ट 10 years में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। और अभी भी जो चाहे वेस्ट बर्निंग का हो चाहे लेगेसी वेस्ट का हो, ये इशू हमेशा आता रहा कि लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द एयर पोल्यूशन, इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन ऑन दी जो है वेस्ट, जो इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। तो कुछ अगर आप यू वांट टू ऐड दैट पॉइंट, अगर कुछ कहना चाहें। नहीं, हम लोग तो वैसे फील्ड के आदमी हैं, ज्यादा स्टडी में विश्वास नहीं रखते, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वेस्ट के इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से एयर पोल्यूशन तो होता ही होता है। अब चाहे वो लीगेसी वेस्ट हो चाहे वो फ्रेश वेस्ट हो, तो जहाँ पे भी अगर डिस्पोजल प्रॉपर नहीं होगा, लोग अपने को जितने भी कर्मचारी हैं या लोग हैं वो जलाते हैं। अब ये जब तक जलाना बंद नहीं होगा तो पोल्यूशन बंद नहीं होगा। तो हम लोगों को इस तरीके की कोई एक्टिविटीज करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से वेस्ट की बर्निंग ना हो। तो वेस्ट बर्निंग से ज्यादा पोल्यूशन होता है रादर देन लीगेसी वेस्ट से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और लीगेसी वेस्ट में तो कोशिश करते हैं कवर करके, और जो मीथेन निकलती भी है कभी कभी, तो वो बहुत मतलब कम क्वांटिटी में होती है,
मैक्सिमम Yes, कवर yes. करने से मीथेन रुक जाती है और फिर या फिर उसमें आग लग जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में ही कन्वर्ट हो जाती है। अदरवाइज हम मीथेन को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको भी हमको अगर उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो हमको फ्लेम में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। यस यस। तो गुप्ता जी जी मैं ये एक चीज बता, देखिए हम लोग कितने साल, जी waste has become a part of our air pollution. We are getting the ingredients of waste in जी our air pollution. Is it not ridiculous? Is it, our awareness? Is it the role of the citizens' roles or responsibilities? Sometimes I feel really very bad whenever the source apportionment study shows road dust contribution is this, waste burning is this, legacy waste is this, coal is like this. कितना बेकार लगता है कि हम लोग अगर वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से करें तो 30% तो हमें टॉक्सिसिटी कम कर ही सकते हैं। बिल्कुल वेस्ट बिल्कुल वेस्ट बर्निंग is not if it is converted into CO2, the problem is not that much, but if it is unburned hydrocarbon, the biogenic product, this is really problematic. All these are carcinogenic. यस This is the part we have again failed to educate our people. That complete burning and incomplete burning, there are two different issues. And complete burning in a closed chamber or with adequate oxygen is one thing. But in incomplete burning in openly, that is more dangerous. that is more dangerous. There is more that those people are doing at nearby areas, they are more exposed. That we have really not been able to consider. We keep on blaming this air pollution, but why you are not blaming waste? Why we are not blaming our construction industry? Why we allow so much of industry if it is not within the carrying capacity? Those questions should also go simultaneously. Otherwise, the cycle of 360-degree will never be complete, and we will keep on fighting and discussing all these issues. देखिए दो Thank you. सेक्टर में तो हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, एक तो वेस्ट सेक्टर में और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। हालांकि कई साल से It is in our hand. स्टैंडर्डाइजेशन कर It दिया is जाए। in our hand. It is in our hands. Yes, and if we are able to control these two sectors primarily, we can reduce 60% of the problems in our air quality. So air pollution, if we are really considering it is a bottling people's success domain, it is not correct. All it has to be, it is to be integrated science. It is a social science. And all social scientists, we all are social scientists, they should form a forum, platform, and discuss and resolve how this area-based pollution can be controlled. This is my submission. Thank you very much, sir. साहब एक चीज का जवाब दीजिए कि दिल्ली में विंटर की ऑनसेट हो चुकी है, प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सबके सामने आ रही हैं, और आपने अभी बिल्कुल करेक्टली हाईलाइट किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बहुत पोल्यूशन जनरेट हो रहा है। लेकिन रोज अखबार में मैं पढ़ता हूँ, अरे यहाँ का फ्लाईओवर नहीं बना है, इसको स्पीड अप करना है, इसको 15 दिन में खत्म करना है, पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं बनी है, इसको जल्दी से खत्म करना है, हमें ये वाली बिल्डिंग को कंप्लीट करना है। तो इनके ऊपर अंकुश कौन लगाएगा? तो हमारे मैं बता रहा हूँ गुप्ता जी, इसका आंसर बहुत सिंपल है। हाँ, इनका बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट है ना, इसमें जो हम लोग हर मटेरियल लाके इन सीटू मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा रोक दे। बिल्कुल, हर चीज स्टैंडर्डाइज कर दे। मेरे बीम कॉलम प्रीकास्ट होके आए थोड़ी दूर से, लास्ट टाइम भी ये सेशन हुआ था कि भाई बहुत सारा मटेरियल जो है प्रीफैब किया जा सकता है, उसको स्टैंडर्डाइज लेके आइए और लगाइए। हम अपनी इंडस्ट्री के मेथड को बदला ही नहीं हम लोगों ने अभी तक। वो नहीं बदल रहे हैं हम लोग। और अभी कंक्रीट वही साइड पे बनाई जाती है, ये नहीं पहले प्री के सारे चले आ रहे थे, बहुत सारे अभी हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत जरूरत है इसको करने की। जरूरत है।
और लेकिन फॉरेन जी, कंट्री जी। में जाके देखिए कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मतलब बिल्कुल 3 दिन मैं जब जापान में था, कलवर्ट बनी और मेरे को पता नहीं चला कि वहाँ पे 1% भी पोल्यूशन हुआ हो। बिल्कुल रात में काम करते थे और बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में काम होता था और कंट्रोल्ड बिल्कुल हो जाता था। यही बात है। हमारी तरह स्टैकिंग तो कभी मैंने कहीं पे देखी ही नहीं, मटेरियल स्टैकिंग तो कहीं पे भी नहीं देखी मैंने, ना जब यूएस में देखी, ना मैंने वहां पे देखी। हाँ तो तब तैयार होके सामान आता है और बस फिटिंग का काम होता है। एग्जैक्टली तो हम लोग अगर डिसिप्लिन ना होंगे, हम लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, व्हाटएवर द डेवलपमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इफ दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड their pollution, people are suffering. And we keep on blaming how long this metrology is responsible, toxicity is not has been carried out, health exposure not carried out. But we know where are the problems. At least we can reduce those local emissions locally. Then we'll think of the globally, regionally, everything, whatever we want to do. The integration is missing, sir. और कुछ भी बोलिए, हम लोग को एक साथ जोड़ के काम करना डिमोलिशन पड़ेगा। हमारे यहाँ साइंस मैनुअल होता है, डिमोलिशन हाँ, सारा मैनुअल होता है, जो कि सब कुछ मैनुअल होता है। बहुत बड़ा रीजन है एयर पोल्यूशन का, बहुत बड़ा रीजन है। एंड वो इसके लिए ना मॉनिटरिंग ना मिटिगेशन, कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एंड हम लोग वो आजकल लैंड यूज पैटर्न के ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देते। भाई यहाँ पे क्या लैंड था, कितना आपका स्लोप था, उसका था कुछ भी दे दो, वाटर फ्लो किस तरफ था, ग्रेडियंट किस तरफ था, ये सब चीज पे कोई ध्यान ही नहीं देते। बिकॉज नेचुरल सेटिंग जो नेचर एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं पूरा हजारों हजारों साल को, उसको हम भूल जाना चाहते हैं। बुलडोजर दे दिया, बस हो गया। So this is not the way of development. Development without ecosystem, development without land use pattern is no development, sir. It is all short-sighted development. Thank you very much. ज़्यादा ही बोल दिया. Thank you. आज सर बहुत अच्छा डिस्कशन, आई थिंक वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि जब तक हम जो डिफरेंट हम बात करते हैं कि चाहे लोकल पोल्यूशंस पे, बिकॉज मेट्रोलॉजी मे नॉट अवर हैंड, बट लोकल जो है सोर्सेस पोल्यूशन का, दैट वी गवर्नमेंट मस्ट, आई मीन दो जो फार डिस्टेंस पोल्यूटेंट्स या मेट्रोलॉजी may not be our control, but definitely this is the local sources का है, वो very very important to that we can control. तो आज बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, everybody बहुत ही डिटेल्स में एंड बहुत ही वैलिड बहुत पॉइंट्स रेज हुए, इनको नीड टू बी एड्रेस, और इंटीग्रेशन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सम एक्सपर्ट जो अदर फील्ड फ्रॉम द एनजीओ और प्राइवेट, everybody is required to be very very integrated approach. तो आज we have discussed this report and thank you everybody, all my our experts, और जो हमारा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर के HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, आप सब लोगों के जो एक्सपर्ट्स के साथ में जो होता है समाज के लिए, आई थिंक दैट विल बी ए गुड फॉर जो डॉक्टर के अग्रवाल का जो उन्होंने मुहिम स्टार्ट की, और अवेयरनेस पे, पब्लिक हेल्थ पे, इंटीग्रेशन विद द इन्वायरमेंट, ये बहुत आगे हमें काफ़ी हेल्प करेगी। और आज का इसी का जो टॉपिक है, सबको अगेन मेरी क्रिसमस के साथ इस आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। एंड अगेन फॉर ऑल आवर व्यूअर्स एंड अभी सभी एक्सपर्ट मेंबर्स को मेरी क्रिसमस। थैंक यू एवरीबॉडी। सबको मेरी क्रिसमस। नमस्कार।